सो गाइज, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स पास आ रहा है तो आई वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. दीज बुक्स आर फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन. First is this Super 10 mock test for IAS prelims general studies paper 1 CSAT exam. This thoroughly updated and revised 5th edition contains 10 mock test, or you can say sample test, designed exactly as per the latest pattern of UPSC CSE prelims. The latest IAS prelims test format is completely followed to provide the aspirants with real exam-like experience. As asked in previous years, a lot of questions were based on government's policies, schemes, so the book contains newly designed MCQs based on the latest trends or happenings in the social, economic, and political climate of India. The book offers the best quality mock test with detailed solutions to each and every question, so you can revise your syllabus very well. And guys, this book is also available in Hindi. The next book is Super 10 Mock Test for IS Prelims General Studies Paper 2 CSAT exam. And guys, this is the second edition of the book and it is fully sold. These sample tests are designed exactly as per the latest pattern, and you get newly designed MCQs based on the latest trends and variety of questions as asked in previous year papers. The mock tests provide more weightage to comprehension, basic numeracy, and logical reasoning. Here you get DI and mental ability questions as per the last 2-3 years CSET paper 2. Each mock test provides detailed solution to each and every questions, and guys, the solutions are errorless and authentic. So guys, if you want to buy these two very useful books for your UPSC CSE prelims, the link is provided in description box. Don't forget to check. सो गाइस, मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल टिप देने वाली हूँ. बहुत टाइम से एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से और मिडिवल हिस्ट्री से. तो अगर आप लोग यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स इस बार देने वाले हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें,
क्योंकि आपको कई बार सुनने को मिलता है कि एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मिडिवल से नहीं आते, तो इनको छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एंशियंट और मिडिवल की एनसीईआरटी को ज़रूर कवर करें और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक बार ज़रूर चेक करें। और वैसे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट्स के लिए करने हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए गाइस। और बाकी इम्पोर्टेंट टिप्स और गाइडेंस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट लिख सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let